your district, you would do it for all the actions. But we're just doing it for 3. अभी हम ये एक्सरसाइज सिर्फ पहले दिन के लिए कर रहे हैं, लेकिन जब आप अपनी डिस्ट्रिक्ट में जाएंगे आप इन दोनों के लिए भी यही एक्सरसाइज कर सकते हैं. So now we can build a trajectory. By here, no change. By here, maybe 5% gain. By here, this is getting high now, so maybe 6-7%. High, very, so maybe 8%. Very big, another 8%. Then this one, so actually it's closer to back to there. And then this one, now you see it tailing off again. So what you see here this is obviously very rough, we're doing it quickly. If we were doing it in an office with statistics, we could put real numbers in here. But we're just doing it as an exercise here. But what you see is the shape of the trajectory. With these 3 initiatives, we're getting close to the target. Maybe if we'd done the other 2 as well, with a small amount extra impact, we'd have hit the target. I'm just illustrating a way of thinking about planning. And the point, the point is, first of all, to think hard about what gain you can get from the actions you take. Very often, people in governments do a plan, but they don't think what difference will it make to the numbers. Secondly, this makes you think about the time sequence, and it gives you an ability to monitor whether your plan is working. बेसिकली माइकल ने क्या किया है, इन तीनों इफेक्ट्स को लिया है, तीनों फैक्टर्स को लिया, उनके इफेक्ट देखे. क्वार्टर 1 में क्योंकि सबका इफेक्ट 0 था, इसका मतलब है कि टोटल एनरोलमेंट आपकी उतनी की उतनी रहेगी, क्योंकि कोई भी इनमें से फैक्टर अभी देने से मार नहीं आ रहा. लेकिन आप देख रहे हैं क्वार्टर 3 में 2 फैक्टर्स का इफेक्ट मीडियम है और एक का लो है. आहिस्ता आहिस्ता आपका इफेक्ट आना शुरू हो गया, 5% इंक्रीज होगा. उससे अगले क्वार्टर अगर आप देखें, इन दो तजावीज की वजह से आपको हाई इम्पैक्ट आ रहा है और एक की वजह से लो आ रहा है. तो पहले से क्वार्टर 3 की निस्बत क्वार्टर 4 में एनरोलमेंट अब ज्यादा बढ़ेगा. हमने अज्यूम किया कि शायद 6% बढ़ता है. अगर उससे आगे देखें, उससे अगले क्वार्टर में पहले 2 फैक्टर्स की वजह से हाई इम्पैक्ट आ रहा है और एक की वजह से मीडियम आ रहा है. यानी ये पिछले वाले क्वार्टर से अब एक फैक्टर और ज्यादा बढ़ गया, 2 से मीडियम हो गया, बाकी दोनों हाई ही है. तो यहाँ पे 7% इंक्रीज आएगी. इसी तरह आप आगे जाके देखें, दोबारा से इफेक्ट लो होना शुरू हो गया है, जिसकी वजह से जो इंक्रीज है, अभी भी एनरोलमेंट इंक्रीज हो रही है, लेकिन जो इंक्रीज है उसका साइज कम होता जा रहा है. तो इस एक्सरसाइज का मकसद ये है कि अगर आपने अपनी एनरोलमेंट फोरकास्ट करनी है, वो आप डिफरेंट एक्शंस के थ्रू देख सकते हैं कि हर एक्शन का इंडिविजुअली अलग से कितना इफेक्ट होगा एनरोलमेंट पे. और जब आप इसको कंबाइन कर देंगे सारे एक्शंस को, तो आपके पास टोटल एनरोलमेंट की फोरकास्ट आ जाएगी कि एनरोलमेंट क्या होगा. Okay, so the points that need reinforcing, I'm trying to make these 2 points again one more time. It helps you think about the impact of your actions on the results. This is important. And secondly, it gives you the time sequence so you can monitor performance. Just repetition. बेसिकली 2 पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे. लेकिन इस एक्सरसाइज के 2 फायदे हैं. एक तो आपको हर एक्शन का इफेक्ट पता चल जाता है कितना ज्यादा इफेक्ट होगा, और दूसरा ये पता चलता है कि इफेक्ट कब होगा, एक्शन का इफेक्ट कितना होगा, और दूसरा आपको ये पता चलता है कि टाइमिंग क्या होगी, कब जाके होगा. Okay, quick question. Yes. कॉलम नंबर 3, 4 और 5 में सेम है, 2 हाई है और 1 मीडियम है. कॉलम नंबर 4 और 5 सेम सिचुएशन है, 2 हाई है और मीडियम है, और उसके अंदर कैसे की जाएगी इतनी. लेकिन ये सिर्फ हमने रफ किया है. हो सकता है
कि इस इफेक्ट में इसका जो मीडियम इफेक्ट है वो दूसरे फैक्टर के हाई से भी ज्यादा हो। वो तो आप जब रियल डाटा के साथ करेंगे, नंबर्स के साथ, तो हमने रफ एक्सरसाइज की है, लेकिन जरूरी नहीं कि टीचर प्रेजेंस का हाई और ट्रांसपोर्टेशन का हाई एक जितना हो। क्या पता है ट्रांसपोर्टेशन का हाई उसके मीडियम से भी ज्यादा इफेक्ट है। वो तो जब आप ऑफिस में रियल नंबर्स के साथ करेंगे तब आपको पता चलेगा कि हर फैक्टर का एग्जैक्ट नंबर कितना इफेक्ट है। तब आप हाई मीडियम लो नहीं लिखेंगे। जब आपका एग्जैक्ट नंबर होंगे फिर आप नंबर लिखेंगे कि टीचर प्रेजेंस की वजह से 2% पड़ेगा, इसकी वजह से 6% पड़ेगा, और तुम सबको ऐड करके टोटल इंक्रीज आएगा। ये हमने एक रफ एक्सरसाइज की है क्योंकि हमारे पास अभी रियल नंबर्स नहीं है। Okay, so any other questions? Anybody else want to ask a question? Okay, now some good news. My colleagues Saad, Ali, Caitlin, we're going to do for you, for each one of your TESILs, for each of your targets, these trajectories. We will do those ourselves and we'll send them to you. So for every target, you'll not just have your district trajectory, but you'll have your TESIL trajectory. And you can use that to monitor the TESILs in your district. बेसिकली माइकल आपको कुछ शब्द दे रहे हैं कि आपके लिए डिस्ट्रिक्ट की ट्रेजेक्टरीज तो ऑलरेडी बनाए गए हैं, लेकिन हमारी टीम, मैं, माइकल, केटलिन और साथ अब तहसील लेवल पे आपको हर टारगेट के लिए आपको ट्रेजेक्टरी बना के भेजेंगे। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए था कि ट्रेजेक्टरी बनेगी कैसे, लेकिन हमारी टीम आपको बनी बनाई तहसील लेवल तक हर टारगेट के लिए ट्रेजेक्टरी बना के भेजेंगे। Okay. Javed has a question at the back. Yeah. Come here. How do you use them? Okay. Okay, fine. So, just last point then. Thanks, Javed. Once you've got these trajectories, every quarter you can monitor. So for the chief, for the secondary schools, he can monitor your districts against trajectory every quarter. He's going to do that. So is the Chief Minister. When you get the TESIL trajectories every quarter, you can have a review meeting with your TESIL. Are we on trajectory? If you're not on trajectory, it doesn't mean necessarily that somebody's performing badly. There may be a problem. You help solve the problem. If they're ahead of trajectory, that's good. If they're on trajectory, that's good. If they're below trajectory, solve the problem. But every quarter, and in a minute we're going to talk about routines, regular reviews of progress, and this trajectory is absolutely central to that. बेसिकली आप माइकल ये बता रहे हैं कि ट्रेजेक्टरी जो हम आपको भेजेंगे वो आपको किस काम आएगी, आप उसका इस्तेमाल क्या करेंगे। तो बेसिकली यही ट्रेजेक्टरीज जो हम आपको भेजेंगे, ये ट्रेजेक्टरीज चीफ सेक्रेटरी के पास भी होंगी और चीफ मिनिस्टर के पास भी होंगी, और हर क्वार्टर और हर मंथ वो इसको मॉनिटर करेंगे कि आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल टारगेट ट्रेजेक्टरी के अगेंस्ट कहाँ पे है, आप उनकी ट्रेजेक्टरी से ज्यादा है या नीचे हैं। इसी तरह आप लोग तहसील लेवल की जो ट्रेजेक्टरीज हैं वो तहसीलों को देंगे और मॉनिटर करेंगे हर मंथ के बाद कि वो अपनी ट्रेजेक्टरी से ऊपर है या नीचे है। इससे फायदा ये होगा कि आपको आइडेंटिफाई पता चल जाएगा कि तहसील में प्रॉब्लम है और आप अपनी तवज्जो उन तहसील पे डाल सकते हैं, उनके साथ मीटिंग कर सकते हैं। जो ऊपर है वो अच्छा जा रहे हैं, जो नीचे हैं आप अपनी तवज्जो उन पे ज्यादा दें। Okay, thank you. So, do you want to return to your tables for the next part of the program? One more question. Yes. Yes, the estimated figures, that's true. Where? But we just, we're using our knowledge of these programs to make guesses. When we do it for your TESILs, we'll use the district data and then TESIL data, and we'll break it down. That will be quite hard estimates. It's talking about the data days from here you will get the data design the data. Okay, because for each of your markers and TESILs, we already have the PMIU data. Yes, PMIU data. Okay, you can return to your tables. Thank you. Turn to page 60, page 60. पेज नंबर 60 अपनी हैंडबुक का प्लीज खोल लें सारे। पेज नंबर 60 I want to remind you. Okay. 5 मिनट
Okay, attention please. All right. Okay, thank you everybody. Can everybody pay attention please? प्लीज अटेंशन दें सारे. Thank you. Thank you. Thank you. Right. I just want to take you through the whole training program very briefly. We started with targets, the goals you've set. Then we talked about how your role needed to change. Then we talked about barriers to delivery, to implementation. Then we talked about overcoming those barriers in different ways. That was what you were doing this morning when the Chief Minister arrived. Then we talked about, and you see it on the wall of the brown paper, we talked about prioritising those actions. And then finally, we talked about taking those actions and turning them into a trajectory. बेसिकली हम कह ये रहे हैं कि हमने कल से जो अब तक एक्सरसाइजेस की हैं, सबसे पहले हमने ये डिस्कस किया कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है ट्रेनिंग का. उसके बाद हमने देखा कि आपका नया रोल क्या होगा. फिर हमने ये डिस्कस किया कि आपको नए रोल में क्या चैलेंजेस, किन चैलेंजेस का सामना होगा. फिर हमने एक्सरसाइजेस की ये जानने के लिए कि उन चैलेंजेस को दूर करने के लिए आपको क्या क्या इकदाम लेने पड़ेंगे. फिर हमने उन इकदाम को प्रायोरिटाइज किया कि उनमें से कौन से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. Okay, so now, supposing we've got all that in place, how in your district do you make sure that the tehsils, the markas, the schools implement your plan so that you have a performance that follows trajectory? And here we talk about routines. The routine, every regular time periods, monitoring of performance. What you see on page 60 are the 3 routines we had when we worked for the Prime Minister in England. So on all of our targets, we sent to the Prime Minister every month a note, short note, telling him about progress against trajectory and what we were doing to solve any problems. बेसिकली बात हमने जहाँ पे रोकी थी कि जब एक दफ़ा आपकी तहसील्स को पता चल गया कि कौन कौन से एक्शन उन्होंने लेने हैं और उनको अपनी ट्रेजेक्टरी का भी पता चल गया कि उनका टारगेट क्या है, उसके बाद वक्त आता है उन टारगेट्स के अगेंस्ट प्रोग्रेस को मॉनिटर करने का कि हम ऐसे हमारे पास प्रोसेस होने चाहिए जिससे हम मॉनिटर कर सकें कि जो हमने ट्रेजेक्टरी बनाई है उस पर हमारा प्रोग्रेस क्या हो रहा है. तो माइकल यूके की एग्जांपल दे रहे हैं कि यूके में 3 तरीकों से मॉनिटरिंग होती थी. जो सबसे पहला तरीका है वो ये है कि हर महीने प्राइम मिनिस्टर को एक खत या नोट भेज दिया जाता था जिसमें हम बताते थे कि आपकी ट्रेजेक्टरीज के अगेंस्ट ओवरऑल कंट्री में ये प्रोग्रेस है, ये मुश्किलात हैं और इन मुश्किलात को हल करने के लिए हम ये एक्शंस ले रहे हैं. Okay, thank you. And then the second routine we had, we call it stocktake meeting. Every quarter, every 3 months. And in this meeting, we actually reviewed and debated performance on each target with the relevant leaders from the relevant department, with the minister and his top officials.